This is Shruti Mehta. This is my fourth year as a PhD scholar at Sitara IIT Bombay. I have completed my bachelor's in biotechnology and master's in medical biotechnology from Department of Biochemistry, MS University, Vadodara. Yes, I am a Gujarati. Then I joined National Facility for Drug Discovery at Rajkot as a JRF under the guidance of Professor Agnihotri. The project revolved around computer-aided drug designing for various types of cancer and HIV. Then an opportunity created with an industry partner wherein I was supposed to do drug target interaction studies for herbal nanoformulation, and it generated 3 different patents for various applications. I've also worked as Indian Society for Chemists and Biologists as a secretariat. It was a non-technical kind of work wherein I was supposed to get funds from various industry partners to arrange an international conference, help with the accommodation for overseas guests, and also help with the cultural program, and I performed as well. So that was quite an interesting learning journey. At the age of 23, I had multiple scientific achievements on my profile, and that was appreciated by the government, and they gave me Young Researchers Award in January 2017. Later, I joined Biosciences Department IIT Bombay as Senior Research Fellow. It was another interesting project. It was development of microparticle formulation for multi-drug resistance TB. It was an inhaler based formulation that was also appreciated by various industry partners later. Meanwhile, I've cleared CSIR JRF exam with All India rank 82. It gets you through various prestigious Institute of India for PhD program, and they also provide a fellowship for 5 years on a monthly basis. I always wanted to contribute my scientific knowledge for the welfare of society, and my current department Satara, which is Center for Technological Advances in Rural Areas, that gave me that perfect opportunity to work for society. So they have very different kind of projects for the welfare of rural area people, especially in terms of electricity, water, agriculture, nutrition, etc. So I joined Sitara IIT Bombay for my PhD in January 2019. I also got married in February 2019. So सब कुछ साथ में शुरू हुआ. Initially I proposed that I will develop food based, nutritious, convenient and affordable product for non-communicable disease like diabetes, cancer, pulmonary disease, etc. I'll choose one of the disease and work for it, and I gave my seminar presentation on that particular topic at the end of our first semester. And I clearly remember my guide Satish Agnihotri sir was present, and he was like, "ये पूरा presentation तो सही है Shruti, but why don't you do the same product development for child malnutrition?" So we have thoroughly studied about child malnutrition in our first semester with the help of Dr. Rupal Dalal, Professor Agnihotri and Professor Amit Arora. So we were introduced to this topic multiple times during our first semester, and it was quite critical issue then. It is still a very critical issue right now, and there is a gap that needs to be filled with some product or idea or strategy or something that was quite clear. So I was quite convinced with the project, and I accepted it. So I did my initial market research, and I went through multiple research papers for this particular topic of child malnutrition, and I got to know about 2 things. Point number 1, that children of our country between 1 to 3 years of age are mainly dependent on like rice, roti, staple foods, etc. They are not getting sufficient amount of vegetables, fruits, eggs, non-veg food on daily basis. So they are not getting sufficient amount of good quality protein, lipids, your omegas, which is very important for the brain development in initial stages of life. They are not getting sufficient amount of multivitamins and minerals like magnesium, zinc, iron, calcium through the diet. So that was point number 1. Point number 2 was the market research. So what was affordable was not nutritious. What was nutritious was not affordable. So there is a clear gap,
and a better product can help the children for sure. So I thought about this and I started working in March 2020, but tabhi COVID aa gaya. So it was very difficult or impossible to work in the lab at that point. But since I proposed that I'll create a food based product, so then I thought, why should I wait? I started doing some preliminary experiments in my kitchen itself. I developed juices, jelly, khakra, murmura types of thing at my place, and then I realized, okay, even if you develop some nutritious, delicious recipe, the child will not consume the same thing over and over again. But that particular child needs all these nutrients on daily basis for a very long time. I came up with a dry powder supplement formulation which is ready to use. It is extremely convenient, very easy. So what you are supposed to do is you cook different kinds of household recipes like upma, roti sabzi, dal rice, veg, non-veg, whatever you wish to feed your child. Cook that recipe, open the sachet, add this developed formulation, this dry powder into that recipes, mix it and give it to your kid, and that child will get sufficient amount of protein, lipids, minerals, all the type 2 micronutrients which is very essential for like gaining proper amount of weight, height, for a very good brain development in first 1000 days. So it is as simple as that. I have done a lot of experiments to develop this formulation. I'm still working on it. Hopefully I'll be able to launch this product in a year or two. I would like to thank all my professors, especially Professor Satish Agnihotri, Dr. Rupal Dalal and Professor Amit Arora for introducing me to such an interesting scientific problem and a critical issue. Like, if I can help even one kid to get better in terms of height, weight, brain development, I'll be the happiest. I would also like to thank our wonderful nutrition group. So our nutrition group has developed a lot of health spoken tutorial videos which are available on YouTube, wherein you get information about pre-pregnancy nutrition, pregnancy nutrition, once you have your kid, then various kinds of breastfeeding techniques have been mentioned. When you giving like when you start solids for your child or complementary feeding, then they have mentioned a lot of vegetarian and non-vegetarian recipes on that platform, so your child can get all sorts of nutrient through the diet itself. And those videos were really helpful for me because I have recently given birth to a beautiful baby girl like 5 months before, and I can't thank enough to our nutrition group. Our nutrition group has versatile janta. We have chemical engineers, mechanical engineers, life science students, and everybody is working together to reduce this problem of malnutrition in our country and like overseas. We are extremely determined to fulfill our goal, and we'll definitely make it happen. Thank you so much. Hello, I am Vidya Sanap. I am PhD research scholar at Sitara IIT Bombay. I did my bachelor's in electronics engineering, and then I pursue my career as IT professionals in IT corporates for more than 9 years. But to pursue the career in development sector, I did masters from Sitara from 2015 to 2017. And as IT is a cross-cutting domain, to apply it in the development sector, I choose one of the rural government employment scheme, that is NREGA, where I work with Professor Agnihotri to understand the IT systems which are implemented for unskilled wage payment and its impact on the payment processing. After my MTech, I work with Ministry of Rural Development as MORD fellow for 2 years. And during my pregnancy, I took a gap. In my motherhood experience, I understand the importance of nutrition. I myself faced many problems during my breastfeeding as well as the complementary feeding technique. I still remember the day when Dr. Rupal Dalal and Professor Agnihotri came to my hospital to teach me the proper breastfeeding techniques. So that time I realized a person like me has faced the problem like this, breastfeeding and the complementary feeding. What kind of problems faced by the tribal women in the tribal areas,
and the reasons for the malnutrition in those areas. So this create the interest in nutrition domain. Then I started working in this domain as a professional with Professor Agnihotri. Being an IT professional, I started looking at the ICDS data to understand how the service delivery happens, where the shoe pinches, and to analyze, to help the local field level officers in their day-to-day monitoring. We have created the data analytics and data visualization portal for them. So one of the portal is Know Your District portal, which we have created with the ICDS based data. After that, we work with the international organizations like UNICEF also to create the data visualization techniques for the public health surveys data. The website is Nutrition India Info. You can go and check that website also. Apart from ICDS, we started also work on the health, because children who born with the low birth weight or the preterm birth has more chances to fall in the malnutrition. So just to understand the health service delivery and their data, we moved to the health domain also, and now I started working with the health data to understand the health data and their impact on the birth as well as the immunization. My key research area interest in the health is to understand the health information system, its impact in the public health system service delivery, and the issues of data quality which emerge in this area and which affect the evidence-based decision making in public health. Thank you for being with us. Join us in this nutrition journey. Have a great Poshan Maah. Hello all. Today we'll be looking at Rajasthan's journey from NFHS around 4 to NFHS around 5 in terms of reduction in levels of child malnutrition, in terms of child mortality regime, and also what has happened to anemia among children 6 months to 59 months to be precise, and women in the age group of 15 to 19 and pregnant women. Rajasthan is a large state, so its performance has a bearing on a all India level. As we did in the case of Bihar and Jharkhand, we will be doing this discussion today in Hindi. हिंदी क्षेत्र के राज्यों में इन चीजों पर जब विमर्श होता है तो तकनीकी कहे जाने की बदौलत वो अंग्रेजी में होता रहता है। हमारा प्रयास रहेगा ये दिखाने का कि इन चीजों पर काफी ढंग से चर्चा हो सकती है, और वह भी हिंदी में और तकनीकी जानकारियों का सहारा लेकर। कुल मिला के हमको ये नजर आता है कि राजस्थान ने बाल कुपोषण की दर को घटाने में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है NFHS 4 और NFHS 5 के दौरान। जहां तक बच्चों की मृत्यु दर का सवाल है, वहां भी राज्य का प्रदर्शन अच्छा रहा है। एनीमिया के मामले में अगर हम देखें तो प्रदर्शन अच्छा रहा है, या उसको कह सकते हैं ठीक ठाक रहा है। लेकिन ये जब हम देखते हैं तो उस समय राजस्थान के अलग अलग इलाके, उनका प्रदर्शन या उसमें आया हुआ सुधार या उसमें आया हुआ बदलाव जो है वो अलग अलग दिशाओं में जाता नजर आता है। इसका मतलब है कि जब हम समस्या का समाधान करने की दिशा में प्रयत्न करेंगे तो हमारे प्रयास जो है वो केंद्रीकृत नहीं होके विकेंद्रीकृत होने चाहिए। इसलिए इसका महत्व है कि हम इसको राजस्थान के नक्शे पर देखें, कहाँ क्या परिवर्तन हुए हैं। ये सारी जानकारी का इस्तेमाल जब हमने किया तो हमने 2 साइट्स वेबसाइट का इस्तेमाल किया। NFHS 4 के डेटा के लिए हमने nfhs4.indiagis.org का इस्तेमाल किया, और NFHS 5 के लिए nfhs5.indiagis.org का इस्तेमाल किया है। कोई भी हमारे दर्शक इसको खुद भी व्यवहार कर सकते हैं और अपना विश्लेषण खुद कर सकते हैं। बाकी जो स्लाइड्स आपको दिखेंगे वो अंग्रेजी में दिखेंगी। इसका तात्पर्य यह है कि जिन्हें अंग्रेजी से इत्तेफाक है वो इस सारी चर्चा को अंग्रेजी में समझ सकें।
सबसे पहले हम देखें अंडरवेट की परिस्थिति। उसमें अगर आप देखेंगे तो NFHS 4 और NFHS 5 के दरमियान राजस्थान ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। बस अगर एक छोटा सा हम पट्टा छोड़ दें दक्षिण पूर्व की तरफ एक दो जिलों का, तो तकरीबन सारे राज्य में परिस्थिति में सुधार है। लेकिन जब हम परिस्थिति में सुधार की बात करते हैं तो राजस्थान को इससे भी आगे जाना पड़ेगा। ये जो तुलना है वह राजस्थान के NFHS 4 और राजस्थान के NFHS 5 के दौर के बीच की है। इसका दूसरे राज्यों के तुलना में कोई वे हमने कोई इसमें विश्लेषण नहीं किया है। अगर हम स्टंटिंग की देखें बात, स्टंटिंग में भी हम देखेंगे राजस्थान में काफी परिस्थिति में सुधार हुआ है। स्टंटिंग में सुधार होना ये उतना सहज काम नहीं होता है। अंडरवेट और वेस्टिंग में सुधार जल्दी आ जाते हैं, लेकिन इसमें अगर हम देखेंगे तो एक दो तीन छोटे क्लस्टर्स अगर हम कहें या पुंज हैं, उनको अगर छोड़ दें तो राजस्थान का इसमें प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। और जब हम डेटा रेंज की बात करते हैं तो NFHS 4 में अगर हम देखेंगे तो 28.4% बच्चे निचले स्तर पे और 54% बच्चे अपर एंड पे ये स्टंटेड थे। अब यह रेंज घट के 20.9 पे आ गई है और निचले स्तर पे, और 54.3 की जगह ये 46 हो गई है। तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं आप इसको। वेस्टिंग पे आए, वहां भी हम देखते हैं कि काफी सुधार हुआ है, लेकिन अगर हम एक पश्चिम उत्तर वाले दो तीन बड़े जिले देखें वो, और नीचे भी अगर हम देखते हैं तो दो जिले करीब दक्षिण की तरफ और करौली का जिला है, वहां थोड़ा सा चिंता का विषय है। तो इसमें राज्य सरकार को विचार करना पड़ेगा और इसमें पहल भी करनी पड़ेगी कि इस परिस्थिति में कैसे सुधार लाया जाए। जब हम सीवियर वेस्टिंग की बात करते हैं तो वहां थोड़ा सा मिला जुला हमें चित्र नजर आता है। कहीं पे सुधार हुआ है, कहीं पे सुधार नहीं हो पाया है। लेकिन अगर हम इस डेटा रेंज को देखें, वो घटी है, सामान्य मात्रा से घटी है, लेकिन उसमें घटत आई है, ये हमको देखना पड़ेगा। और अगर हम चले शिशुओं की मृत्यु दर के बारे में, इसमें तीन अलग अलग सेगमेंट हम लोग देख सकते हैं। नियोनेटल यानी जन्म से 1 महीने के अंदर होने वाली मृत्यु, इन्फेंट मोर्टेलिटी पहले वर्ष में होने वाली मृत्यु, और अंडर 5 मोर्टेलिटी 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जो मृत्यु होती है उसकी दर। इन तीनों में राजस्थान का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। तो स्टंटिंग में अच्छा प्रदर्शन करना, IMR को घटाने में अच्छा प्रदर्शन करना, ये अपने आप में एक सराहनीय बात कही जा सकती है। आप इसमें देख सकते हैं कि शहरी राजस्थान ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। जैसे आप देख लें, IMR अगर 31 से घट के 22 पे आ गया है तो ये अच्छा प्रदर्शन है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हालांकि वो 44 से शुरू हुआ था, लेकिन 44 से घट के 32 पे आया है। हम नियोनेटल मोर्टेलिटी में भी अगर देखेंगे तो 29.8 से सीधे 20.2 पे आना, ये अच्छा लक्षण है। और जहां तक 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर का सवाल है, वहां भी प्रदर्शन अच्छा ही हुआ है। जैसे आप देखेंगे 50.7 से 37.6 पे चले आना, ये अपने आप में सराहनीय है। एनीमिया की कहानी सी है, वो हम अगर देखें तो जैसा सर्वभारतीय स्तर पे इस बार NFHS 5 के सर्वेक्षण में देखा गया है, राजस्थान अपवाद नहीं है इसका। अगर हम देखें तो काफी परिस्थिति खराब हुई है, और जो 40.2 ये निचले बाउंड पे अगर हम डेटा रेंज में देखें वो प्रतिशत था जो बच्चे एनीमिया के शिकार थे, वो 40.2 से बढ़ के सीधा 58.6 तक हो गई है। इसके बारे में विचार करने की जरूरत है, और यह कई बार थोड़ा सा डेटा
पर प्रश्न चिन्ह लगा भी सकता है। अगर हम महिलाओं की बात देखें 15 से 19 साल की महिलाओं की, तो उसमें भी आप देखेंगे कि काफी परिस्थिति खराब हुई है। और जो डेटा रेंज है एनीमिक महिलाओं की के प्रतिशत का, वो सीधा 30 से 42 पे चला गया है निचले छोर पे, और ऊपरी छोर पे वो तकरीबन वैसा ही। तो ये इसमें फिर हमें विचार करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अनीमिया की ये जो आंकड़े हम देखते हैं या बदलाव जो देखते हैं, बाकी जो परिवर्तन हुए हैं उनसे मेल नहीं खाता है। बहरहाल हम गर्भवती महिलाओं के अनीमिया की तरफ चले तो यहाँ राजस्थान का प्रदर्शन अच्छा रहा है। और ये थोड़ी सी मजे की बात है जो बाकी राज्यों से थोड़ी सी हटके है, कि पहले 2 पैरामीटर जो थे वहां अनीमिया की पोजीशन में काफी खराबी है, लेकिन जहां तक गर्भवती महिलाओं का सवाल है वहां परिस्थिति सुधरी हुई दिखती है। हाँ, उत्तर की तरफ अगर हम गंगानगर और हनुमानगढ़ को देखें, जो वैसे प्रॉस्परस जिले हैं लेकिन वहां परिस्थिति खराब हुई है, तो इस पे विचार करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वैसे देखें मोटे तौर पे तो सारे राज्य में यह परिस्थिति गर्भवती महिलाओं के बारे में सुधरी है। तो ये तकरीबन राजस्थान की कुल कहानी बनी है। और अगर हम देखें कि राजस्थान का मिला के कैसा परफॉर्मेंस रहा है, तो इसने बच्चों के कुपोषण का स्टंटिंग में, वेस्टिंग में, अंडरवेट में प्रदर्शन अच्छा किया है। सीवियर वेस्टिंग में थोड़ी सी मिली जुली छवि हमें देखने को मिलती है। जहां तक बच्चों के मृत्यु दर का सवाल है, अच्छा प्रदर्शन रहा है तीनों धड़ों में, नियोनेटल मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी और अंडर 5 मोर्टेलिटी, और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया। एनीमिया में जैसा हम देख चुके हैं कि इस परिस्थिति खराब हुई है। जहां तक गर्भवती महिलाओं का प्रश्न है वहां तो हम उसमें परिस्थिति में सुधार देखते हैं। कुछ जिले अगर हम देखें राजस्थान के, वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं। जैसे सीकर अगर हम देखें तो हर बात में वो बिल्कुल उसमें सबसे ज्यादा सुधार हुआ है। अगर हम देखें जैसे अंडरवेट हो, वेस्टिंग हो, स्टंटिंग हो, तो क्या सीकर इस बात का प्रयास कर सकता है कि वह राजस्थान का पहला कुपोषण मुक्त जिला बने? और वैसे अगर हम देखें पोषण अभियान की शुरुआत, उसे जो लॉन्च किया गया था झुंझुनू से ही किया गया था। झुंझुनू और सीकर पड़ोसी जिले हैं। तो अगर सीकर एक कुपोषण मुक्त जिला बन जाए पहले, तो ये शायद एक आदर्श स्थापित कर भी सकता है। हम अपने दर्शकों को इस विचार के साथ हाथ छोड़ देते हैं और फिर हम किसी दूसरे राज्य के विश्लेषण की ओर बढ़े।